Assalamu alaikum, everyone. I hope you are live on YouTube. हम अभी थोड़ी देर में we will be starting with the session. Uh, and since I am sharing a video from my computer and playing it live for you, this video, this is a segment from my NLP Practitioner Certification Training. And the things that you will be learning in today's session, these are what we call convenient beliefs of NLP or presuppositions of NLP. इस वीडियो में I'll be explaining it कि क्या है, तो मैं इसलिए यहाँ पर मुझे explain करने की जरूरत नहीं है. Take lots of notes. I and Ramzan, we will be coming live in between. So, just to check how you're doing and uh, take notes, like pay attention. This is the foundation. If you want to understand, if you want to learn NLP, these are the basics. Okay. So get them really well. And, as you start applying these things, these ideas, these concepts in your life, you will find things will become easier for you. So use them, apply them, learn them, and keep learning them. So take notes, and you can post because आप YouTube पे live इस वक्त देख रहे हैं इसको, so you can post your questions comment section में, and I'll see if I will answer your questions, and Ramzan may answer your questions, and we will keep coming in between and checking. हम so बीच में मैं transmission को pause करता रहूंगा. This is going to take about 2 hours. Okay, so invest these 2 hours in your learning, and I can assure you, you will love this. Okay, this is something really powerful once you understand. So learn it, apply it, and change the way you live. So let's begin. आवाज तो वॉइस नहीं आ रही है. Arief? Arief? Hope you want to understand, if you want to learn NLP, this is
नहीं आ रही है। Okay, can you guys please hold? Let me just check. There is some kind of technical thing here. Neuro-linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी जात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा. क्योंकि I feel like I need it.
because I can look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी parenting बहुत improve हुई with my daughters. My relationship improved. इसके अलावा मेरे husband के साथ मेरे relationships बहुत improve हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. So next we have what we call convenient beliefs of NLP. Okay, inconvenient beliefs को NLP की ज़बान में we also call them presuppositions of NLP. NLP, किसी भी साइंस के, किसी भी area of study के कुछ basic hypothesis होते हैं. So for example, हम मुसलमान हैं. Being a Muslim, we have certain beliefs. We operate from those beliefs. Okay, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानते हैं. आपके बाद किसी भी शख्स को जो नबूवत का दावा करे उसको हम झूठा मानते हैं. ओके, और ये हमारे दीन के बेसिक्स हैं. ओके, नमाज को हम फ़र्ज मानते हैं, हज को हम अल्लाह का हम फ़र्ज मानते हैं. जो दीन के अरकान हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये हमारे दीन के बेसिक्स हैं. हम इन चीज़ों को ये हमारे फाउंडेशंस हैं. अगर कोई शख्स इससे हटे तो हम उसको मुसलमान नहीं मानते. कोई शख्स अगर कहे कि जी नहीं, नाउज़ुबिल्ला नमाज का इनकार करे या हज का इनकार करे, यानी और बोले कि नहीं जी इसकी कोई फर्जियत नहीं है, तो वो शख्स जो है उसको हम इस्लाम में मुसलमान नहीं मानते. So there is a belief system that we follow that tells us that we are Muslims. Okay, and you'll find that there is this belief system that operates in everything that humans do. NLP में जो convenient beliefs हैं, इनको हम presuppositions कह रहे हैं. So we are presupposing that this is the case. We are not arguing that this is the case. Understand the difference. देखो, belief में और fact में एक difference ये होता है कि beliefs को you cannot prove, facts को you can prove. So if I say कि अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा. Okay, now this is not my belief. मैं इसको छोड़ूं, आप छोड़े, कोई मुसलमान छोड़े, हिंदू छोड़े, यहूदी छोड़े, दहरिया छोड़े, it doesn't matter. पाकिस्तान में छोड़े, अमेरिका में छोड़े, जब आप इसको छोड़ेंगे किसी चीज को, वो ऊपर से नीचे जाएगी. So you don't have to believe on this. This is something that you can prove without any difficulty, anywhere, anytime, and anyone can do that. Okay, so there is no fact. This is a fact. This is not a belief thing. But belief is something we cannot prove. Okay, if you can prove it, then it's a fact. So हम यहाँ पर जो NLP के beliefs हैं, we are not saying that this is true. Please keep this in mind. We are saying we act as if it is true. We believe as if it is true. And we operate from this mindset. So this is the mindset with which an NLP practitioner or a master practitioner or a trainer or a master trainer operates. Okay? This is the basic founding principles of NLP. Okay? So इसमें जो सबसे पहली चीज है, that is that perception is not reality. आमतौर से इसको जो कहा जाता है, perception is not reality, or the map is not the territory. ये जो आपने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, आपने सुनी होगी स्टोरी कि कुछ नाबीना लोग थे, उनको पता चला हाथी के बारे में, तो वो हाथी देखने के लिए गए और उन्होंने जाकर किसी ने हाथी की सूंड को पकड़ा, तो किसी ने उसके कान को पकड़ा, किसी ने उसके साइड पे हाथ लगाया, किसी ने उसकी दुम पे हाथ लगाया, किसी ने उसके पैर पे हाथ लगाया, and everybody came up with their own versions of what an elephant is. So किसी ने कहा कि ये तो दीवार की तरह है, किसी ने कहा दरख्त की तरह है, किसी ने कहा सांप की तरह है, किसी ने कहा पर्दे की तरह है. It was like everyone had a different version. Now every one of them was right in their own way, yet every one of them was wrong. Now हमारे पास इसी तरह जो information आ रही है external environment से, हमारा जहन जो है उस information को constantly distort कर रहा है, delete कर रहा है, generalize कर रहा है. उस distortion, deletion और generalization के नतीजे में हमारी perceptions form हो रही. Okay, so
वो जो perceptions form हो रही हैं वो हमारी एक internal reality बन रही है. So it's like there are two kinds of realities. I call them a small r reality and a capital R reality. A small r reality is our own personal realities, what I believe or I think to be true in my personal experience. Others may not agree with that. So for example, let's suppose I believe this is the best pair of glasses in the world. Okay, now others may not believe that. In my small r reality, this is the case. In someone else's small r reality, this may not be the case. Okay, so we have our own perceptual reality, and then there is this capital R reality. Capital R reality is like things that the masses would agree. So for example, if I say this is a tree, okay, or this is a plant behind me, and then that's a lamp behind me, that's something that like we understand that that's a lamp. Okay, if I say this is a glass of water, now people understand what glass of water, this is like agreed upon reality. So that's what I mean by capital R reality. Now here's another thing. Some people may agree that this is a glass of water because वो वही language बोलते हैं जो कि मैं बोल रहा हूँ, या कोई दूसरा वो कोई generally बोली जा रही. लेकिन अगर फर्ज करो किसी और language में इसके लिए कोई और अल्फाज हो, okay, और पानी हम इसको बजाय ग्लास करेंगे, मुझे उर्दू में सॉरी नहीं पता ग्लास को क्या कहते हैं, लेकिन इट्स लाइक इसके अंदर जो मशरूब है उसको पानी कहते हैं. Okay, so उनके सामने अगर if I say water, they may not understand it. They may have a totally different different reference to it. So their perceptual reality may not match with my perceptual reality until I explain to them that I call it water, और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे इसको water कहा जाता है, और जहाँ पे रहते हैं इसको पानी कहा जाता है, and then we come to that common ground. So the इंसान का the first thing, the basic is that perception is not reality. Think about this. अगर फर्ज करो कि कोई आपसे पूछे कि जी ये कल की क्लास में क्या हुआ था, आप में से हर एक अपनी तरफ से 100% सच बताएगा. Still, आप लोगों के जो कुछ आप बताएंगे, it will be different. It will not be the same, because every one of you will distort, will delete, and will generalize information in your own ways. You will be telling 100% truth. You will not be lying. Yet there will be differences in your description of what happened. Okay, because you have created your own map of the world, your own internal reality. And this is the reason you will find कि जब भी जैसे आप देखते हैं कोई किताब आप पढ़ते हैं और जब आप उसे दोबारा पढ़ते हैं या कोई ऑडियो बुक सुनते हैं और दोबारा सुनते हैं या इवन कोई वीडियो देखते हैं, आप ये प्रोग्राम आपने अटेंड किया एंड आप जब दोबारा इसकी वीडियो देखते हैं, अच्छा क्लास में ये भी हुआ था, I missed that. Okay, because at that moment your brain deleted that thing. But then the next time you see, you have a different reference and then you are able to see that. So we are constantly making maps of the world. जैसे हम कहें, we are forming opinions of the events in our lives. So we are all map makers in that sense. So perception is not the reality, or the map is not the territory. That's the first thing. The second thing is people do not respond to what is happening. That is reality, but to what they think is happening. That is their perceived reality. Okay, so दूसरे लफ्जों में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, किसी की भी जिंदगी में क्या हो रहा है. फर्क इससे पड़ता है वो क्या समझ रहा है, उसके ख्याल में क्या हो रहा है. Okay, so people behave, people act, respond on the basis of their perceptions of reality, not on the basis of reality. Okay, so for example, okay, मेरी eyesight कमजोर हो गई तो मैंने चश्मा लगा लिया. Okay, so but somebody says हाँ जी ये जरा जो है ना दिखाना चाहते हैं तो इसलिए चश्मा लगाया. Another person may say यार इनकी एज ज्यादा हो रही है ना, अब बूढ़े होते जा रहे हैं तब इनकी आंखें खराब हो रही हैं. Another person may take it totally differently. So depending how a person is interpreting the information that Kamran Sultan is wearing glasses, their behavior towards Kamran Sultan, their feelings towards Kamran Sultan will be different. Okay,
And this is how it works for every one of us. हमारी जो भी feelings आ रही होती है, they come from the result of the interpretations that we are making. हम लोग अभी इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे. So, and ये जो convenient beliefs है, I will be referring to them throughout the program. रोजाना तकरीबन आप कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इनका रेफरेंस आता रहेगा, and you will know these inshallah ta'ala very well. Then the next is that people end up in problems not because there is lack of opportunity, but because their perceptions are so limited that they cannot see the opportunities around them. This one actually comes directly from Virginia Satter. लोग प्रॉब्लम्स में, लोग मसाइल में इसलिए नहीं फंसते हैं क्योंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी है. लोग प्रॉब्लम्स में इसलिए फंसते हैं बिकॉज उनकी जो परसेप्शंस हैं वो इतनी महदूद है that they cannot see the opportunities around them. Okay, so I do a coaching program. It's called prosperity coaching. उसमें मेरे पास बहुत बार ऐसे हुआ कि sometimes people come and then say जी opportunities नहीं है. Okay, and I tell them, it's like look at this chair and tell me how much money there is. Okay, now think about this glass. Can you imagine how much money there is in this glass? Okay, apparently क्या है जी, $2 का ग्लास होगा, $1 का ग्लास होगा, right? But just think about this. Okay, इसका रॉ मटेरियल किसी ने प्रोवाइड किया होगा. उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी. उस ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल की कॉस्ट आई होगी. जहां पर ये रॉ मटेरियल सेव किया गया होगा उस जगह की भी कुछ कॉस्ट होगी. जब इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गया, इसको जलाया गया, जहां इसको शेप देने के लिए इसको पकाया गया शीशे को, तो उसको पकाने के लिए गैस चाहिए होगी, कोई फ्यूल चाहिए होगा, उसको पकाने के लिए कोई चूल्हा चाहिए होगा. वो पैसों से आया था, उसको भी किसी ने प्रोवाइड किया था, वो भी किसी का बिजनेस था. फिर जिस मोल्ड में इसको डाल के ये ग्लास बनाया गया और इसके ऊपर इसका शेप दिया, और जब किसी ने इसका शेप सोचा और इसका शेप को डिजाइन किया, मे बी कंप्यूटर पे किया, मे बी उसका कोई प्रोटोटाइप बनाया, उस सब के ऊपर उस प्रोटोटाइप को बनाने में, उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में भी पैसा चाहिए था. So there is money in a lot of money in this one single glass. And the question is like, what part of this chain can you be a part of so you can actually make money from it? So some people will look at this and say, $1 का ग्लास है, $2 का ग्लास है. But just think about this. It's like जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में हम देखते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे की मूवी है, बट उस 1.5 घंटे की मूवी में कितनी बड़ी टीम काम कर रही होती है, कितने लोग, जब मूवीज खत्म होती हैं तो कितने सारे लोगों के नाम आ रहे होते हैं. All of those people were paid by the producers of that that movie. बहुत सारे लोग होते हैं, it's like ट्रेनिंग के प्रोफेशन में. मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्लासेस में मैं इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग करा रहा था, तो उसमें many years ago there were some people who came. मैं सिल्वा की, मैं उस जमाने में इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग करा रहा था. there were some people, उन्होंने देखा क्लास के अंदर, I was charging about $180 or $200 at that time. No, sorry, it was about $300. So there was this person who came and उसने देखा क्लास के अंदर टक there were like 22 लोग बैठे हुए. उसने मल्टीप्लाई 22, मैंने $300 दिए. उसने कहा 2 दिन का प्रोग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 2. यार दिस इज गुड मनी. सो so मैं भी अगर बन जाऊं इंस्ट्रक्टर, I can do that too. And then it's like he signed up for my instructor's training, and then he told one of the participants कि जी मैंने तो इसलिए किया, मैंने यूं कैलकुलेट किया. But when they come to the class and then they find, it's like if I'm delivering a training in 2 days, what they cannot see is the years of work that I have done before I delivered that training. You understand? It's like when you see a movie, आपने 1.5 घंटे की मूवी देखी और आपने कहा यार बड़ी अच्छी मूवी थी, 1.5 घंटे की मूवी के इसने हीरो ने इतने पैसे ले लिए, हीरोइन ने इतने पैसे ले लिए. Okay, बट उस 1.5 घंटे की मूवी के पीछे कितना काम हुआ था, कितने लोगों ने काम किया था, वो नजर नहीं आता. So sometimes people make these kind of small mistakes in their lives, and then they end up in problems. Sometimes there is so much opportunity that people cannot see. Okay, then they complain कि जी jobs नहीं है.
So जब मेरे पास लोग आते हैं and then they say कि जी जॉब नहीं, I ask जॉब नहीं है या आप काम नहीं करना चाहते? These are two different things. Okay, so अगर आप काम करना चाहें, जैसे मैंने कहा खाली हम इस ग्लास को ही देखें, तो आप गौर कीजिए इस ग्लास से रिलेटेड कितनी जॉब्स हैं, कितने काम हैं इस ग्लास से रिलेटेड। और इसी तरह ये जो पानी इसमें नजर आ रहा है, इस पानी से रिलेटेड सोचें कितने काम है। एंड जस्ट बिकॉज आई डोंट सी, मैंने कहा क्या है, ग्लास है उसमें पानी है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहाँ है पैसा। ओके, the problem is people are unable to see that their perceptions are so limited, they can't see, and since they can't see, they can't you use that. So this is the third presuppositions. Then the fourth is all learning resources one needs in order to effect a behavior or a behavioral change are already within them. There are no unresourceful people, only unresourceful states. Okay, understand this. आपको अपनी जिंदगी में या आपके पास कोई भी शख्स जब आता है, it's like, why do people come for therapy? Why do people come for coaching? What do they want to change? Here's the simple answer. People want to change the way they are feeling. Okay, so I have this much money and I'm not happy with it. I'm not feeling happy with it. I want that much. I have this kind of relationship and I'm not happy with this. I want that kind of relationship. I have this kind of health. I'm not happy with this. I want that kind of health. So there is something, okay, that is not making me feel good, and I want to change the way I'm feeling. And once that feeling is changed, people think that they'll be happy. We'll talk about that. This is not true, but this is how most people think. Okay, they think if I have this, once I have that, then I'll be happy, which doesn't actually work. However, people, when they come to you for coaching, when they come to you for therapy, when they come to you for a session, they'll be basically coming to you because they want to change the way that they are feeling. Okay, अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में. So जब हम it's like बात कर रहे हैं कि हर शख्स, every person, and this is how we operate, this is what we believe, that every person that you work with has all the resources they need. There is no such thing as an unresourceful person. हर वो रिसोर्स जो आपको अपनी जिंदगी में किसी किस्म की चेंज लाने के लिए चाहिए, वो रिसोर्स आपके अंदर है. ओके, एंड हम बात करें लर्निंग रिसोर्स की. अगर फर्स्ट करेंगे जी मैं चाहता हूँ कि जी मैं ये ग्लास बनाने की फैक्ट्री लगाऊं और इसके लिए, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए, मेरे पास तो पैसा नहीं है. आप क्या नहीं, रिसोर्स आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उस पैसे को हासिल करने के लिए डू यू हैव सम फ्रेंड्स or someone who can lend you money or who can invest in you? Okay, so do you have the skill to convince them? Do you have the ability to learn and acquire that skill so you can convince people? Okay, so you have the resource to learn. The problem is that resources to hai, we are not like willing to put those resources in action. मेरे पास बड़े जबरदस्त बीज हैं, मैंने जी संभाल के रखे हुए, मैं उसको लगाता नहीं हूँ, खराब ना हो जाए. वो रखे खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर मैं उसको लगाऊंगा तो वो कहीं जमीन में लगाने में खराब ना हो जाए. So it's like people have all the resources, they're not using them. Okay, so we operate from that mindset. Now think about this, by the way. When you are operating from the mindset that the person in front of you is totally resourceful, what will happen to you? Can you give me some idea? What do you think? Kya hoga? You can unmute yourself and let me know. Just a minute. Yeah. बताइए क्या होगा आपके ख्याल में? Comparison between your own state and the other person's state. Agar if you are working with people and I'm sorry, can you repeat the question? I am. If you're working with a person and you believe that the person in front of you is someone who has all the resources they need, what will that do to you? Assalamu alaikum. So we will coach them
and we'll ask the right questions so they can end up finding the answers within themselves, because we know they have all the answers. Okay, so let me, give you an example. I mentioned this yesterday. So for example, if I say कि मेरे पीछे ये जो पंखा रखा हुआ है, ये पंखा जो है ये मेरी बीवी ने लिया था और मेरी बीवी को बड़ा अच्छा लगा था, ओके, और जब मैंने ये वाला पंखा लिया, जबकि वो जो पीछे आपको पंखा उधर नजर आ रहा है ना कोने में रखा हुआ, वो वाला जब पंखा लिया था तो मेरी बीवी ने उसको पसंद नहीं किया था. Okay, now if I say that, okay, how does that make you feel? If I say कि ये पंखा है, huh? So how does that make you feel? That your wife had many opportunities and she had the resources to buy the thing she wants to. Okay, is this a fan? No. You see, this is a fan. I'm talking about this structure. No, it's a lamp. It's a lamp. Yeah. Okay. Now, when I say it's a fan, how do you feel? That he's not perceiving it rightly. Okay. Now, here's the question. How do you know this is a lamp, not a fan? Based on my experience. Because we are taught that we have learned that this is not a fan. So when you came in this world, did you know what a fan is and what a lamp is? Exactly not. Okay, so you learned at, अगर first करो आपको यही बताया होगा था कि बेटा ये fan है और जिसे आप fan कहते हैं उससे बताया होता है lamp है. बेटा जरा ये lamp on कर देना. Okay. तो वो भी सही है और हम भी any difficulty saying कि नहीं ये Sir, वो भी सही है और हम भी सही है क्योंकि yeah, but that's not the point. वो सही है. Understand what the point here is. When you say this is a fan or this is a lamp, where is the reference of the fan or lamp really? Is it in this structure or is it in your head? In your perception. Yeah. In your own head, right? So similarly, when you are working with people and a person is sitting in front of you and in your mind you're thinking this is a completely totally resourceful person. How So can who you be will be actually operating from a resourceful state? Do you understand? So it's like जिससे दीन में एक चीज है कि अगर आप अरबिक की कहावत है जिसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं है कि अगर जब तुम अपने भाई में कोई बुराई देखो, खराबी देखो, तो 70 रीजंस तलाश करो कि उसमें वो खराबी क्यों नहीं है. फिर भी ना मिले तो कहो उसमें वो ऐसा नहीं है, मेरे समझने में कोई गलती, मेरे देखने में कोई गलती नहीं. It's like हुस्ने ज़न. जब आप किसी के बारे में हुस्ने ज़न रखते हैं तो उसको उसका फायदा बाद में होगा, आपको पहले होगा. Do you understand? It's like this. अगर फर्स्ट करो ये ग्लास है लेकिन फर्स्ट करो एक बॉटल है, ओके, इस बॉटल में परफ्यूम है, तो जो परफ्यूम है इस क्लोज्ड कंटेनर में इसकी जो स्मेल है सबसे पहले कहां जाएगी? इस कंटेनर में आएगी ना, इसके अंदर रहेगी, इसको बेनिफिट करेगी. यस सर. राइट. बाद में कोई स्प्रे करेगा उस तक जाएगी, बट पहले वो किधर होगी? इस कंटेनर में. ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट करो कोई बदबूदार चीज है तो वो उसकी बदबू सबसे पहले किसके ऊपर असर करेगी? इस कंटेनर को. Okay, now think about this. अगर किसी की सोच बदबूदार होगी और उसकी सोच खुशबूदार होगी तो इससे पहले वो किसी और पे असर करे, पहले किस शख्स के ऊपर असर होगा उसका? Do you understand? उसके अपने ऊपर. So, it's like when you're operating from this mindset, the person that you're working with is totally resourceful. Comparatively, think about this. जब बहुत से टीचर्स, अरे यार स्टूडेंट्स आजकल सारे idiots हैं, बेवकूफ हैं. Think who's actually getting harmed in that. Do you understand? So this is what we are saying. All
resources one needs is in order to effect change is already within the person, and there are no unresourceful people, only unresourceful states of mind and body. Sometimes people act from unresourceful states. If you see this picture screen pay, there are so many people like this who do not accept their limitations, and there are very healthy people who buy into their own perceptual limitations. I've seen people, really qualified people, really experienced people, believing their limitations and not doing anything. They keep telling themselves stories and stories after stories that they are not good enough, they can't do, they are not educated enough, they are not qualified enough, they don't have enough friends, they don't have enough resources, blah blah blah, and then keep on buying into their own limitations. वो limitations उनकी अपनी सोच की पैदावार होती है. Then next we have the meaning of communication is the response you get. Resistance is a sign of lack of rapport. So it's not what you intended, it's how the person perceives it. Okay, so aapne koi baat kahi and you thought you're being funny and you're being nice and you're being just like you're in a good mood, and you say something and the other person takes it as criticism. Okay, so the meaning of your communication, the way you expressed yourself, the tone that you use, the physiology that you use, the words you use, the sequence of words you used, all of that to that person means criticism, sarcasm. And even though to you it meant being funny. So the meaning of communication, it's not what you say, it's how the other person responds. And when people show resistance to your communication, that's an indication कि आपके और उनके दरमियान rapport की कमी है. You need to build a more stronger connection with them. We'll do some exercises, inshallah ta'ala, soon later in this course, probably the day after tomorrow, maybe tomorrow, depending on how fast you pick. But we'll be doing some exercises specifically on developing and building strong connections with people. Then next we have all behavior is purposeful and thus positively intended and has value in some context. Okay, हर behavior, हर काम जो behavior कोई भी शख्स कर रहा हो, even though वो behavior जो है it may be negative, मगर उसके पीछे जो intentions हैं, they are always positive, and those intentions have value in some context. Okay, हर किस्म का behavior. So a person may be depressed, and that's a negative behavior. A person may be sad, and that's not a positive behavior. And even if we take an extreme example on this, okay, so first करो कोई शख्स जो है अपने ऊपर बम बांध के जाता है और किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में, किसी बाजार में जाके अपने आप को भी उड़ाता है और साथ में लोगों को भी उड़ाता है. Extremely negative behavior. ना religiously acceptable है, ना ये it's like socially किसी लिहाज से acceptable है. ये बिल्कुल negative behavior. But just think for a moment कि वो शख्स जो ये काम कर रहा है, in his or her map of the world, what is that person doing? उसके ख्याल में क्या हो रहा है? उसकी intention क्या है? वो ये समझ रहा है कि वो बम मार के जन्नत में चले जाएगा. Exactly. Okay, so उसकी जो intention है वो positive है. उसकी intention जन्नत में जाना है. Okay, वो अपने ख्याल में कोई जिहाद कर रहा है, वो अपने ख्याल में कोई काफिरों को मार रहा है, like उसका whatever his map of the world is. लेकिन उसकी जो behavior है वो negative है. So this is what we are saying. A person may have negative behavior, but the intention behind that behavior is positive. I work with a number of people, having this depression हो रहा है और sadness है, but उस depression का या उस anxiety का उनको फायदा क्या होता है जब उनसे पूछो, and you learn this, कि जब उनसे पूछो कि इसका what's the benefit, the first answer to that question is कोई फायदा नहीं. But when you probe further and you find कि उनका जब मैं इस condition में होता तो they get a lot of attention. So the intention is to get attention, which is a positive thing. But the behavior they're using to get that attention is negative. Okay. So, but sir, excuse me,
इससे आपको लॉन्ग टर्म अटेंशन तो नहीं मिलती अगर कोई बंदा रोता रहता है कि that's besides the point. That's besides the point. हम उसकी बात नहीं करें. But the point is कि that behavior, you know, brings people, the intention is positive. Whether that behavior is working or not working is besides the point. जो शख्स जो behavior कर रहा है, we understand and we believe as NLP practitioners कि जो भी बिहेवियर कोई शख्स कर रहा है उसके पीछे उसको कोई ना कोई उसकी इंटेंशंस पॉजिटिव है. सो हम उसकी इंटेंशंस को व्हेन वी डू द चेंज वर्क हम उसकी इंटेंशंस को चैलेंज नहीं करते, हम उसके बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं. ओके, यू विल अंडरस्टैंड दिस. अभी हम लोग इसके ऊपर आगे जब काम करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस. So I have a question. Sure. Can I ask you now or later? You can ask them later. May just hold your question. Okay. Let me go through this section. Then uske baad we can do question answers. People work perfectly. They make the best choices, behavioral choices available to them. Problems happen when people lack rapport with their own unconscious. People are not the behaviors they do. Okay. Now, that's the thing. Like kal aap logon ke class ke baad I had a coaching session with someone, or it's like this person told me about all the different types of problems they had and the issues that they were going through. And one of the things that I tell people almost in every session that I do is this: there is nothing wrong with you. It's perfectly okay. Whatever you are doing, it doesn't mean there is anything wrong. Okay, so any behavior, people work perfectly. अगर जो उसके पास set of choices थी, जो उसके पास options थी, in order to manifest their intentions, they selected the best they could have done. Okay, think about this. अगर फर्ज करो कि आपने कहीं दावत में जाना है, आपने अपनी wardrobe खोली, आपके सामने मुख्तलिफ ड्रेसेस हैं. Do you select the one that you think would be best for this occasion, or do you select something which you think would not be the best or would just be the worst? Okay. For most people, what do you do, by the way? Do you select the best one or the worst one? Best one. Yeah. Okay. Mariam, are you there, by the way? I don't know if you're there. Omar, are you there? Hina, are you there? Yes, I am, sir. Okay. I am. Yeah. So yes, it would be good if you respond sometimes, because आपके camera भी off है तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप हैं या नहीं हैं. Okay, and it would be good if I can see some responses. So it's like इंसान के पास जो भी given choices थे, वो उसमें से जो best उसको लगता है वो choice लेता है. Deliberately इंसान consciously खराब choices लेने की कोशिश नहीं करता. Generally जो उसके पास जो best choices, and this is also for behavioral choices. अब हम पिछली इस पे आए कि example है कि जी उसको उसकी जो चाहता था वो attention चाहिए थी उसको. अब वो attention लेने के लिए उसको कोई और तरीका नहीं समझ में आया. उसने कहा जब मैं रोता धोता हूँ तभी attention मिलती है. Okay, जब मैं चीखता हूँ तब attention मिलती है. जब मैं फलाना behavior करता हूँ तो attention मिलती है. Even though वो behavior is not good, even though that behavior is harmful, but still it fulfills the requirement of and brings the attention, so person does that behavior. Okay, so but people work perfectly, so and they make the best behavioral choices available to them. So problem किस वक्त होती है? This comes from Milton Erickson, by the way. People have problems happen when people lack rapport with their unconscious mind. इंसान का जो आप कह लें जो उसका ज़मीर है वो उसको किसी चीज से रोकता है और वो नहीं रुकता. Okay, और वो जब नहीं रुकता उसके सामने कोई चीज आई, आइसक्रीम आई, उसने कहा यार नहीं खाओ, बड़े मोटे हो रहे हो, तुम्हारी से शुगर भी इसमें हाई हो रही है. कहता है यार थोड़ा सा तो चलता है. फिर वो कहता है कि नहीं देखो दिस इज नॉट राइट, तुम्हें डॉक्टर ने भी मना किया है, मर जाओगे, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यार थोड़ा सा तो चलता है. और जब वो उसमें जाता है तो what they're doing is like their unconscious mind is telling them not to do something and they're ignoring it and they're still doing it. Okay, and when they're doing it they're actually harming themselves. अभी मुझे याद आ रहा है बहुत साल पहले I heard an alim, यहाँ अमेरिका के एक आलिम है, उनका मैंने एक प्रोग्राम सुना था. इसके अंदर he spoke about this famous novel
crime and punishment. उसका जो उन्होंने जिस्त बयान की थी, said, you know, उसका जो basic idea है that crime itself is the punishment. Sometimes, like, what is sin? Sin is the crime that we do against our own selves. So eating this meetha is harmful for me, for my health, but I'm eating it. So I'm actually committing a sin against myself. Okay, so people, when it's like their unconscious mind is telling you, इसको एक हदीस के उससे अगर हम समझने की कोशिश करें, जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पे एक धब्बा लगता है, अगर वो तौबा कर लेता है वो साफ हो जाता है, वो नहीं करता है और दोबारा गुनाह करता है तो एक और धब्बा लगता है, और अगर वो करता रहता है तो दिल जो है एक वक्त आता है कि पूरा काला हो जाता है. अगर हम इसको थोड़ा सा, and again remember I am not an alim din, I'm just using as to help you understand, एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ कि हाँ, इंसान एक काम करता है, उसके अंदर से उसका ज़मीर, आप कह लीजिए उसका अनकॉन्शियस को कहता है नहीं, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, बट ही और शी स्टिल डज इट, and then दोबारा a time comes when the unconscious says to hell with you. Okay, दूसरे लफ्ज़ों में जो हम कहते हैं लानत भेजो, okay, and then stops communicating, and that's when the rapport between with the unconscious mind breaks. You know, it's like दिल पूरा काला हो गया, अब there is nothing will affect, okay, unless इंसान तब भी तौबा कर ले. जो तौबा का दरवाजा खुला रहता है बड़ी जबरदस्त चीज है. So ये जो unconscious mind है, okay, इससे जब रैपो इंसान का खत्म होता है, that's when people get into problems. Okay, now here's another important thing. People are not the behaviors they do. Understand this. So let me explain it. देखो हमारा जो ज़हन है, we work at many different levels. Okay, हमारे जो ज़हन जो lowest level जिस पे काम करता है, that's the level of environment. Environmental level पे we think in terms of where I am, where am I, मैं कहाँ हूँ. Okay, so मैं घर में हूँ, मैं दफ्तर में हूँ, मैं बाजार में हूँ, मैं किसी के दूसरे के घर पे हूँ, मैं मस्जिद में हूँ. Different environments में we do different behaviors. Okay, so behavior is what I do, the actions I do. Okay, so मेरे घर के environment में मेरे behavior different होता है, मस्जिद के environment में different होता है, बाजार के environment में different होता है, दफ्तर के environment में different होता है, किसी दूसरे के घर में हूँ तो मेरा behavior different होता है. Okay, so there are different behaviors that I do in different environments. This is true for every one of us. Now, then in order to do those behaviors, we use certain set of skills or capabilities. How I do what I do. So अगर मैं अपने दफ्तर में हूँ और मैं अपने काम को मैनेज कर रहा हूँ, अपनी टीम को मैनेज कर रहा हूँ, लोगों के साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, so I use different set of capabilities. अगर मैं मस्जिद में हूँ और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं इबादत कर रहा हूँ, then I use a different set of skills. अगर मैं अपने घर में हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, उनके साथ में अपने relationships build कर रहा हूँ, उनके साथ में अपना time enjoy कर रहा हूँ, then I'm using different set of capabilities. Then ये जो तीन यहाँ तक है, so इसमें जो सबसे lowest level है, this is the environment and then behavior and capabilities. As we are moving up, we are actually going deeper, and we are going more towards the unconscious part. यहाँ तक, until the level of capability, we are still in the domain of conscious. Then beyond this, behind this, we have what we call beliefs. Beliefs are our reasons for our actions, why I do what I do. So मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं negotiate क्यों कर रहा हूँ, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ उनका ख्याल क्यों रख रहा हूँ, why I do what I do. So my reasons for my actions. We will talk in detail about beliefs, और इसके ऊपर हम लोग बहुत तफसील से कई बार बात करेंगे, मुख्तलिफ perspectives से हम इसके ऊपर, and how you identify beliefs and how you change beliefs. You will learn that inshallah. Okay, now we go even deeper. Then we find that there is something deeper, and that's my values. What's important? Because we believe something is important. We believe my religion is important. So it's like namaz padhna jo hai, that's important.
we believe my family is important, so doing things for my family is important. Because we believe, we value something. Values basically हमारी जितनी motivations आती हैं जिंदगी में वो हमारी values से आती हैं. It's like, think about this. The reason that you're sitting here and attending this program, or even if you're watching recording of this, is because you believe and you value learning these things. In your map of the world, the value of spending your time, your energy, your money in learning these things is at least equal to what you are investing in it, or more than that. And if it was not important, you wouldn't be here. So जितनी motivation आती है हमारे अंदर वो आती है हमारी values से. Okay, so when you work with people and when people come to you and they say जी मेरी जिंदगी में कोई motivation नहीं है, कोई direction नहीं है, that's when you need to look into their values. Okay, ये जो values वाला काम होता है practitioner training में we don't go into that. ये बहुत एक बड़ा topic है master practitioner में. हमारा एक दिन से ज्यादा खाली इसके ऊपर लगता है. एक दिन से मेरा मतलब basically like 3 से 4 sessions. Okay, जब हम online में कर रहे हैं. But that's a huge topic. Okay, we'll not go into a lot of detail on values here, मगर हम beliefs पे इंशाल्लाह जाएंगे. Beliefs भी master practitioner में एक बहुत detail का topic है, लेकिन still you will learn जो basically beliefs identify and beliefs change का जो basic process है. So it's like values is the motivations. We value things. That's why we do like there are people who don't value deen. They don't pray. It's that simple because they don't value it. There are people who don't value their families, and their friends are more important than their families, so they prefer to move out and live with their friends rather than with their families. Okay, अम्मा बीमार हैं तो हो, अब्बा बीमार हैं तो हो, no problem. मेरे दोस्तों की पार्टी है, अभी उसकी जरूरत है. So it's like different people will have different values. Now understand this. कोई जरूरी नहीं है कि अगर मेरी कोई चीज values है. Problem एक ये होती है कि अगर मैं किसी चीज को अपनी जिंदगी में या कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में किसी चीज को वैल्यू देता है तो वो ये चाहे कि दूसरा शख्स उसको उतनी ही वैल्यू दे या उसी तरह वैल्यू दे. This is not possible. Okay, so and that's when people get into fights with each other. So मैं भी इसकी values के उस पे जा नहीं रहा. It's a huge topic. हम हमारा सारा session खाली values पे बात करने में निकल जाएगा. So then if we go even higher, then we have identity. Identity is who am I? मैं कौन हूँ? So I'm a father. That's one identity. I'm a trader. That's another identity. I am a Pakistani or an American or a Canadian or whatever. Okay, or I'm a Muslim. So we identify with different aspects of our personality. So it's like we identify with our religion, we identify with our nationality, we identify कि जी मैं मेमन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं फलाने ज़ात को belong करता हूँ. So we put different identities. So in different situations, different environments, to do different behaviors, to use different capabilities, with different beliefs, different values, we use different set of identities. तो मैं अपने घर में बाप हूँ, शौहर हूँ, बेटा हूँ, और इसके लिए मैं मुख्तलिफ चीजें यूज कर रहा हूँ because I have a different identity. But in the environment of, let's say, मैं अपनी ज़ात की बात करूँ कि it's like, so as a मेरे office में I'm a trainer, I'm a coach. Okay, I am I'm a hypnotist. So in that environment of my office, I use different set of skills because I'm using a different identity. Okay, I am, who am I? Okay, so when a person is using इसमें जो language होती है, it's like I am X. Okay, that's the person is operating at the level of identity. Okay, I am a Pakistani, I am a father, I am a Muslim, so I am X. हम जो बात कर रहे हैं इस पे भी जो presupposition हम जो देख रहे हैं that people are not their behavior. Okay, now और कीजिए, behavior is a different level. This is behavior, what I do, and who I am is a different behavior.
सो एक शख्स अगर झूठ बोलता है, that is what the person does. अगर ये कहा जाए कि ये झूठा है, तो that's a different level. Okay, so अच्छा, इसमें फिर एक लेवल और ऊपर आता है, and that is why am I? That's the spiritual level. Why do I exist? My purpose of my existence. Why do I exist? अगर हम इसको business के context में देखें, so it's like the mission, the vision of the organization, why the organization exists, the mission of the organization, the values of the organization, the beliefs, the capabilities, the what the organization can do, and what the organization does, and where does the organization or the business operates. Okay, so ये मॉडल जो है, बाय द वे, दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल लेवल मॉडल. इसका कई बार रेफरेंस आएगा प्रोग्राम में, सो you will get this inshallah. So the highest level is the spirit, and then identity, then values, then beliefs and capabilities, then behaviors, and then environment. Now you see, the thing is कि जब change word की हम बात करते हैं, a change at a higher level will cause changes at lower levels. But a change at a lower level may or may not have any effect at higher levels. मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो अपने आप को अपने रिलीजन से, अब बीइंग अ हिंदू, उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी, उसके बिलीव्स भी डिफरेंट होंगे, उसकी कैपेबिलिटीज भी different only when it comes to doing their religious work, their prayers and whatever, and how they do their prayers and where they do the pray, all of that would be different. Ab let's say कि वो शख्स जो है वो कलमा पढ़ लेता है and he says I am a Muslim. Now when the person says I am a Muslim, उसकी values shift होंगी, उसके beliefs shift होंगे, how he performs his prayers, the actions that they do, the things that they do, and where they pray, all of that will change. Okay, so why? Because यहाँ पर जो change किया, so everything changes. Now on the other hand, as an example, first करो, एक शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ता, okay, और उसको जॉब मिल जाती है हरम में, मक्का में, मदीना में. अब उसका environment change हो गया है, और environment change हुआ तो possible है, it is possible कि environment change होने की वजह से his behavior may change, and his beliefs and his capabilities and everything else may shift. It's possible, but not necessary. As a result, you will find there are lots of people who may live in Makkah or Saudi Arabia जाते हैं, but for them कि जी पाकिस्तान में तो रुपए कमाते थे, वहां चले गए तो रियाल कमा रहे हैं, दुबई चले जाते तो दिरहम कमाते, अमेरिका चले जाते तो डॉलर कमाते. उनके लिए एनवायरनमेंट की चेंज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. सो एक चीज और इसमें है, वो ये कि देखो, हमें दीन में हमें शिर्क से नफरत है, मुशरिक से नहीं है. अगर वो मुशरिक कलमा पढ़ ले तो वो हमारा भाई हो जाता है, लेकिन जो शिर्क है, ये मुशरिक और शिर्क इज व्हाट द पर्सन डज, मुशरिक इज हु द पर्सन इज. ये पर्टिकुलर जो चीज है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि मेनी टाइम्स पीपल मेक दिस मिस्टेक कि somebody does something और उसका जो बिहेवियर उसको आइडेंटिटी बना देते हैं. We all make mistakes. Okay, so if I make a mistake and I say, oh, I'm stupid, imagine what's the suggestion I'm giving, what's the suggestion the person is giving, what level, and और वो जो सजेशन किस लेवल पे जा रही है, I am X, that's the level of identity. Okay, I am idiot, I am stupid, I am dash, whatever that may be. If it is negative identity, इसके जो इफेक्ट आएगा नीचे लेवल्स पे, can you imagine what that effect will be? और on the other hand, अगर फर्स्ट करो कोई बच्चा है, कोई शरारत करता है और उसको नेगेटिव आइडेंटिटी दी जाती है, तो ओवर टाइम वो आइडेंटिटी किस तरह से उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होगी. आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रही है?
Assalamu alaikum everyone. We are at the midpoint, almost 1 घंटा हो गया है हमारी इस आज की ट्रेनिंग को, and I hope you're enjoying it. I hope you're getting it. And if you have any questions, do post them on the YouTube channel, and inshallah I'll see, and if I can, I will respond to your questions. Remember, जो आप program देख रहे हैं, this is a very small segment of NLP practitioner training. These are the founding principles. Okay, ये वो belief system है जिसके तहत हम काम करते हैं. As I explained in the beginning, these are the beliefs, the presuppositions we call them, or you can call them assumptions, just to make it simpler. Okay, and we work through these assumptions when we work with people. और अभी जो model आपने सीखा है, this is one of the most powerful things that you will find. It's like when it comes to changing your life or helping other people, this is one of the most powerful. It's just like ये वो model है जो मेरी training में तकरीबन हर रोज किसी ना किसी तौर पे इसका reference आ रहा होता है, because these are all the different levels जिस पे हम लोग काम करते हैं when we work. When you join NLP practitioner training, you will learn this in a lot of detail. This is a model जिसको हम बार रेफर करते हैं. जैसे आपने सुना इस वीडियो में, I mentioned that NLP is a behavioral technology. Okay, so जो आपका behavior है, आप उस behavior को change करना चाहते हैं, लेकिन एक गलती जो बहुत common गलती होती है वो ये होती है कि लोग अपने behavior को अपनी शख्सियत समझने लगते हैं. Okay, so your behavior and who you are two different things. You may have wrong behaviors, wrong actions. That doesn't mean you are wrong. Okay, you may at times be feeling sad or angry, or it's like मैं कभी-कभी कहता हूँ, it's like सोचो कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम कहते हैं मेरे सर में दर्द है. अगर हमें बुखार होता है कहते हैं मुझे बुखार है. अगर हमें पेट में दर्द होता है तो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है. लेकिन अगर हमें कोई टेंशन होती है, अगर हमें एंजाइटी होती है, अगर हमें किसी किस्म का कोई मायूसी होती है, तो हम कहते हैं मैं डिप्रेस हूं, मैं मायूस हूं. Okay, so the language that you're using has an effect on your neurology. और इंशाल्लाह हमारा अगला जो कल का हमारा जो सेक्शन होगा, कल जो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह, that's about power of communication, power of language. That will give you some idea of what language can do to make sure that you are here tomorrow. Make sure that you attend that session. Okay, because that will help you understand, get some idea of what language can do. How your language may be doing things in your head. Remember, neuro-linguistic programming, how you are programming your own self without knowing it, perhaps. How you may be doing it to other people, your children. जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे रहा था कि कोई बच्चा है वो शरारत करता है. शरारत करना उसका एक रवैया है. हमने कहा शरीर है. Okay? और हमने उसकी पूरी शख्सियत को, कोई बच्चा है डरता है, हमने कहा डरपोक है. These are dangerous things, especially if you're a mother, if you're a father. You have to be very careful. And even when you're applying it on yourself, it's like when you work with me and the kind of change that I work on is this level, the highest level, not behavior. Some people say, teach me something, tell me to do something. Because ये जो lowest level की change होती है, जब आप देखते हैं कि कभी लोग आपको advice देते हैं ना, तुम ये कर रहे हो, अब ये कर लो. So that's a level, बहुत lower level की advice है. It doesn't work. That change doesn't last. So इसी वजह से if you work with me in a coaching session, in a coaching conversation, I don't work at this lower level. Lowest level क्या होगा? इसमें भी कुछ लोग होते हैं जी डिप्रेस, ऐसा करो घूमने चले जाओ. So depression है तो घूमने के लिए किसी दूसरे शहर में, you are changing environment, and then what people will say is कि मैं गया थोड़े दिन के लिए तो बेहतर था, जब मैं वापस आया तो वो डिप्रेशन वापस आ गया. Yeah, because the change was at a very, very low level. So, it's like, watch this. This is something really powerful. And once you get it, because as I said, आज ये जो section है, this is just an introduction. This is just the introduction. ये तमाम principles जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं. When you join my NLP practitioner training, you will find that ये principles जो हैं बार आते हैं. I repeat them so many times that they become part of you. Okay, you start operating from them. So, Ramzan, do you want to say something?
यस सर मुझे याद है कि जब मैंने 2017 में लाइसेंस प्रैक्टिशनर में एनएलपी में जब मैंने एनरोल किया था और ये वाला सेगमेंट जो है वो आप डे 1 में ही कराते हैं, तो सर आपने जैसे ये बिलीफ समझाना शुरू किए तो ये बिलीव्स इतने पावरफुल थे कि उसी वक्त बैठे बैठे मेरे माइंड के जो वायर थे वो रीवायर होना शुरू हो गए। इनमें जो सबसे पहला बिलीव है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। मुझे याद है आपने कहा था नक्शा मंजिल नहीं है, जो कुछ नजर आता है वो नक्शा है, मंजिल नहीं है। ये एक बिलीफ मेरी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला सर। और वैसे तो अभी हमने अब तक आपकी वीडियो में 7 बिलीफ समझे हैं, ऐसे 15 बिलीफ आज आप इंशाल्लाह जितने भी ऑडियंस हैं 15 पावरफुल बिलीफ्स आपके माइंड तक पहुंचेंगे और वो सब के सब बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप इसे अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी में तो आपका नजरिया बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएगा चीजों को समझने का। रिलेशनशिप में अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ इन बिलीफ से मेरे अपने रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो गए, मेरी अपनी कम्युनिकेशंस बहुत इंप्रूव हो गई और मैं अपनी लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को इन बिलीफ्स की बदौलत बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी आसान हो गई, अगर मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा। सो बहरहाल आप तमाम लोगों के लिए ये गिफ्ट है कामरान सर की तरफ से और ये बहुत ही हाईली वैल्यूएबल गिफ्ट है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस सेगमेंट को बाय किया है उन्होंने भी एक बड़ी रकम अदा की है, मगर चूंकि कामरान सर ने आज आपको गिफ्ट दिया है तो इसकी जो वैल्यू है वो इससे कई गुना बढ़कर है। आप जब इन बिलीफ्स को अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी बहुत आसान होती चली जा रही है। साथ ही मैं आपको रिमाइंड करवाऊं कि जो लोग कल सेशन में थे, एट द एंड ऑफ द सेशन हमने आपको बताया था कि कामरान सर ने आपके लिए अपने 3 जो शॉर्ट ट्रेनिंग्स है, जिनमें से आज आप पहली ये ट्रेनिंग देख रहे हैं एनएलपी के पावरफुल बिलीफ्स के हवाले से, ऐसी 2 और भी ट्रेनिंग्स हैं जो एक कल होगी और एक इंशाअल्लाह इस वीक में आगे होगी। तो ये तीनों ट्रेनिंग्स आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और अगेन ये तीनों जो है वो सर का पेड कंटेंट है, जो कि सर लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी की जब आप ट्रेनिंग में एनरोल करेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ना सिर्फ इनको समझ पाएंगे बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस भी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उन सेशंस के अंदर होती है। आज चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो आप प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, मगर जब आप एनरोल करेंगे उस लाइसेंस प्रैक्टिशनर के अंदर तो आप बहुत ही डिटेल के अंदर इन बिलीफ्स को किस तरह से आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज आप एंड तक जुड़े रहिएगा। 2 गिफ्ट्स और हैं हमारे पास, वो हम आपको इंशाल्लाह इस वक्त किसी वक्त इस सेशन के दौरान आपको हम बताएंगे। तो मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि अब तक आपने ये 7 बिलीफ समझे हैं, तो थोड़ा सा आप चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि आपने अब तक इसको कैसा पाया। आई थिंक सर कि वो थोड़ा डिले होके जाएगा, तो आप चाहें तो सर कंटिन्यू कर लें। That's perfectly okay. So ये किसी ने, मैं देख रहा था YouTube पे, किसी ने क्वेश्चन किया ये डेली बेसिस पे, नहीं जी, ये डेली बेसिस पे नहीं है। Okay, we are just giving you this and this will not be available forever. ये video will be available only for next 24 hours. So कल पाकिस्तान के शाम 7:30 बजे से पहले ये वीडियो यहाँ से YouTube से गायब हो जाएगी। जिसने देख ली, जिसने नहीं देखी नहीं देखी। So we will continue with the training. And एक और चीज, Ramzan mentioned कि 15 Ramzan we will not be able to cover all the 15 presuppositions here. हम लोग maybe will do 12. Okay, so let's see कितना हमारे पास time रहता है. And but we will cover as many as we can, inshallah. Okay, so let's continue, and I will share the videos again. Okay. So Aspa has a question. Let me see that. When we say that people are on the deen of their friends, that's in Hadith, doesn't it imply environmental change behavior? Now, is environment के
ऊपर ये जो चीज़ है, इट डज हैव एन इफेक्ट। यानी आपने हदीस में भी आता है ना कि अगर आप इतर फरोश के साथ बैठेंगे तो आपके पास इतर की खुशबू आएगी, और अगर आप कोयला फरोश के पास बैठेंगे, यू नो दी हदीस, मैं खाली मफहूम बयान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पे मैं आगे आपको I'll give you more reference on just like deeper understanding on this। लेकिन एक और चीज़ भी है इसके साथ में, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुशरिकीन के बारे में कि जब वो कुरान पढ़ा जाता था तो वो कुरान का मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब वो कुरान का मजाक उड़ाए तो तुम उधर से उठ जाओ, क्योंकि अगर तुम भी उन्हीं में बैठोगे तो उन जैसे हो जाओगे। हम उर्दू में कहावत है, आपने सुनी होगी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ओके, और आज हमें माहिर नफ्सियात एक चीज बताते हैं, एंड दैट्स what they say is, if you want to change your life, change two things. Number one, change the people you associate with, the kind of people you move with, the friends that you have, the friend circle you think you have, that friend circle, okay, they will have an effect on you। okay, एक जिम रॉन की एक बड़ी प्यारी एक छोटी सी saying है, it's like you are the sum total of your 5 of your average friends, the average of 5 friends that you move with। इसलिए it's like the people that you move with, the teachers, the influencers in your life। if you have like cheaters and crooks as your teachers and influencers, guess what will happen to you? You may not realize, but that's over time, that is what will have an effect। This is why we see a lot of intelligent people following wrong leaders and getting into a lot of trouble। so good that it makes sense। so, हम जो चीज बात कर रहे हैं वो क्या, हमारी जो presupposition थी वो ये that people are not their behavior। okay, this model, this logical level model, ये एक बहुत बार ये इसका भी रेफरेंस आगे आने वाला है, एंड यू विल सी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि तरह तरह से आपके सामने आएंगी। So next we have a person with greatest flexibility in learning, generating options and enhancing choices will usually dominate. One with most choices will dominate। okay, this is called the law of requisite variety। humans or machines, one with more choices, human or machines being equal, one with more choices will dominate। okay, किसी भी situation में जहां पर जिसके पास ज्यादा options होंगी। so for example, being a parent, फर्ज करो आप अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, okay, किसी चीज के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, you have 4 ways of motivating them and they have 5 objections, 5 ways of not doing it, they will dominate। if you have they have 5 ways, you need at least 6, then you will be able to get them to do। अगर फर्ज करो you are a manager और आप अपने subordinate से कोई काम लेना चाहते हैं, they have like, again let's say they have 4 ways of not doing it, you need at least 5 ways of getting things done। so the one with more options, the one with more choices will dominate। okay, I remember one of my trainers, John Lavelle, says like the golden rule is one with the gold makes the rule। okay, so then we have, if one person can do something, we can find how they do it and model it or reproduce it। this is what we call modeling in NLP। modeling जो मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि रिचर्ड बैंडलर ने मिल्टन एरिक्सन को मॉडल किया एंड वर्जीनिया सैटर को मॉडल किया। modeling is something that we learn at master practitioner level। in fact master practitioner में भी बिल्कुल last जो उसका section है उसमें modeling हम करते हैं। लेकिन it's like modeling is not what we do in this at the practitioner level, but this is one of the core beliefs of NLP कि अगर कोई शख्स एक काम कर सकता है, we can find out how they do it and teach it to whoever wants to learn it। okay, और इसी चीज को हम मॉडलिंग कहते हैं कि हमने देखा एक शख्स जो is like he's a really good decision maker, we can have this यार जाहिर है उसके अंदर तो टैलेंट है, ये तो बस एक हमारा एक माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट क्या है कि जब हम किसी शख्स को देखते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज हमें नजर आती है तो हम फौरन कहते हैं बस ये अल्लाह ताला की इसके साथ खास रहमत है, ये अल्लाह ताला की इसके साथ खास करम है, एंड देन वी क्लोज द चैप्टर। आई रिमेम्बर मेनी इयर्स अगो मुझे एक शेख साहब पढ़ाने आते थे, उस जमाने में मैं अमेरिका आने वाला था और इट्स लाइक एक कोर्स का मुझे पता चला था कि जिसके अंदर रीडिंग स्पीड जो है बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं और मेमोरी एनहांसमेंट के उसके अंदर कुछ चीजें थी।
तो ऐसी बातों बातों में मैंने कहा कि जी मैंने सुना है कि हमारी आयमा में भी ऐसे कुछ गुजरे हैं कि जिनको लाइक पेपर देख लेते तो उनको नक्श हो जाता था। तो उन्होंने बताया कि हाँ, बल्कि रिसेंट ज़माने में भी एक मैं बार बार नाम भूल, अहमद शाह काश्मीरी गालिबन एक आलिम थे लास्ट सेंचुरी में, जिनके बारे में था कि वो अखबार नहीं देखते थे, बिकॉज अगर वो अखबार देख लेते तो वो अखबार जो उनके जहन पे नक्श हो जाता, जिसे हम फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। ओके, नाउ जब हम इस किस्म की अपने किसी बुजुर्ग का, अपने किसी भी शख्स का हम सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं ये बस अल्लाह ताला की उनके साथ एक खास करामत थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल पता है क्या होता है? खाने में क्या है? ओके, हमारा तो इंटरेस्ट ही है। ये जो लोग हैं ना, जिन्हें हम आज ये ऊपर से हमारे ऊपर बम मारते हैं, हम पत्थर उठा के खाली मारते हैं। ओके, इन लोगों ने पता है क्या किया? इनके पास जब इस किस्म का कोई इंसान आया तो उन्होंने कहा ये भी इतना ही इंसान है जितना मैं हूं, जितना तुम हो। ये क्या कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स स्टडी। इन लोगों ने उनको स्टडी किया, उनके सोच को। मैंने अभी आपसे कहा आज से 100 साल पहले नेपोलियन हिल ने किताब लिखी थी लॉ ऑफ सक्सेस। आपने उसने क्या किया था? नेपोलियन हिल ने सैकड़ों लोगों को क्लोजली उनको जाके स्टडी किया कि ये कामयाबी कर क्या रहा है, और उसने 17 कैरेक्टर ट्रेट्स, सो जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं, ही एक्चुअली मॉडल्ड देम, ही फाउंड द मॉडल दैट दे वर डूइंग एंड रोट अ बुक कॉल्ड लॉ ऑफ सक्सेस आज से 100 साल पहले। ओके, सो हमारे पास आज भी अगर कोई हमने कहा हाँ यार ये जो है ना, सबसे पहले तो हराम। ओके, अगर इसके पास पैसा ज्यादा है, हराम है, रिश्वत देता है, बेईमान है, हमें पता चला जी ये बहरिया वाला, हमने ये नहीं सोचा कि यार इस बंदे का बिजनेस एक्यूमेंट जो है, दिस इज समथिंग वर्थ मॉडलिंग। ओके, हमने ये नहीं सोचा कि ये बंदा जो है एकदम से गरीब से अमीर हुआ तो ही हैज समथिंग हियर जिसको इसने इस्तेमाल किया है। हमने कहा हराम, रिश्वत देकर किया है। अगर ऐसे ही तो फिर हर रिश्वत देने वाला वैसा क्यों नहीं बन गया? We did not study these people. हमारे इर्द गिर्द ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं, हमने फौरन उनके ऊपर किसी किस्म का लगा के हमने कहा बस चैप्टर क्लोज। अगला तो आपको पता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, खाने में क्या ही बताएं। okay? अपने को खाने से मतलब है, एज लॉन्ग एज अपना पेट भरा हुआ है, जोरदार किस्म की डगार आ रही है, बस सेट है जिंदगी। But if you look around, there are people around you, who are models of excellence in your life. Study them. And that's what we do in modeling. And when you do that, देखो मॉडलिंग में मैं ये समझता हूँ, मैं जब मास्टर प्रैक्टिशनर में जब मैं मॉडलिंग की बात करता हूँ तो आई से दिस, अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इब्राहीम की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ओके, मॉडलिंग का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि हम डुप्लीकेट उसका बन जाएगी। सो इसमें मसलन कोई शख्स अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए, आपके तरीकों को मॉडल करते हुए अपने आप को नबी और रसूल कहे, वो तो काफिर हो गया। ओके, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, आपकी हयात तैयबा को स्टडी करके, आपकी चीजों को स्टडी करके कोई भी शख्स अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। That's what modeling does. So मॉडलिंग का मकसद ये नहीं होता कि हमने किसी दूसरे की पुअर कॉपी बनना है। इसका मकसद होता है कि जो हमारी अपनी सलाहियतें, हम उनको भी टेक देम टू अ हायर लेवल, टू अ डिफरेंट लेवल, जहां पर हम अपने आप को बेहतर बना सकें। ओके, सो दिस इज the presupposition here. Then next we have all distinctions human beings are able to make concerning our environment and our behavior can be usefully represented through the visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory senses. Okay, जितनी भी information हमारे जहन को आ रही है, it's coming through these 5 senses. We use the word visual for sense of sight, auditory for hearing, kinesthetic for touch, olfactory for smell and gustatory for taste. This can be represented, this information that is coming can be represented using these 5 senses.
This is self-explanatory. I don't think this needs explanation. Then language we use is a literal representation of internal processing. इंसान जो गुफ्तगू करता है, जो बातचीत करता है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, वो अल्फाज उसके जहन में होने वाले इंटरनल प्रोसेसेस को इंडिकेट करते हैं. ओके, सो जैसे हमने कहा जी, अगर हम फर्ज करो कि आइंस्टाइन को मॉडल कर रहे हैं, तो अब आइंस्टाइन तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसकी लिखी हुई, उसकी कही हुई बातें हैं, तो वो अल्फाज जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि उसके जहन में प्रोसेसेस क्या हो रहे थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे सामने नहीं है, मगर आपके कहे हुए अल्फाज, आपकी बताई हुई बातें हमारे सामने हैं. सो इंसान की जो गुफ्तगू है, जो अल्फाज हैं, उसके जहन में होने वाले प्रोसेसेस को इंडिकेट करते हैं. सो लैंग्वेज इज अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन. सो मसलन हम इस पे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे आगे. एंड इन फैक्ट ये तमाम प्रीसपोजिशंस जो हैं, यू विल सी, हम बार बार इनको रेफर कर रहे होंगे. तो फर्स्ट करो, एक शख्स कहता है कि आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर for this country or for this business, for this organization. So what the person is telling you, in his or her mind, the image of future is bright. Another person says, you know, कि मुझे बड़ा तारीख मुस्तकबिल नजर आ रहा है. So the person is actually telling you कि उसके जहन में जो images हैं वो dark हैं. Okay, someone says कि जी एक बहुत बड़ा मसला हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके जहन में जो प्रॉब्लम का इमेज है वो बहुत बड़ा है. Another person might say to the same problem, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. This indicates कि उसके जहन में जो इमेज है वो छोटा है. Okay, so language is a literal representation of what people are doing inside their heads, and they may not be consciously aware of it. So इसीलिए, you know, when you're working with people, you keep your eyes and your ears open. Okay. Then we have welcome back. I hope you're enjoying this. If there is any question, please do post it in the chat. And Ramzan has something to share with you. You remember, if you want to learn and you want to go deeper into this, I have my next NLP practitioner training coming up in May. So Ramzan shared some information yesterday. Ramzan can quickly share that information with you again. So, and because there are several things left अभी आज के हमारे सेशन में, so Ramzan, can you just start now? Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, और मैं आपको बता दूं कि ये वो ट्रेनिंग थी जो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम जब मैं कामरान सर से जुड़ा तो वो इसी ट्रेनिंग के जरिए जुड़ा था, और इस एक ट्रेनिंग की बदौलत मेरी पूरी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हेल्थ बहुत बेहतर होने लग गई, वेल्थ बेहतर हो गई, रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए. और अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन एरियाज से जूझ रहे हैं, इन एरियाज में आपको कोई डिफिकल्टी है, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप भी इस ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करें. ये ट्रेनिंग, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है. ये ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग है. लाइव इसलिए है क्योंकि कामरान सर बजाते खुद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड नहीं है. तो इसके बारे में मैं आपको मजीद डिटेल्स बताना चाहूंगा. इस वक्त जो आपके सामने लिंक नजर आ रहा है, और आई एम श्योर कामरान सर अभी आपको चैट बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक आपको भेज देंगे, first-institute.com/courses/NLP-practitioner. जब आप इस वेबसाइट के लिंक पर जाएंगे तो आपने ये पेज सामने नजर आ रहा होगा, सोसाइटी ऑफ एनएलपी एंड डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर्स लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग. कल जैसा कि आपने बताया था कि ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग को डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, जो कि बजाते खुद को क्रिएटर है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के, उन्होंने हाईली रेकमेंड किया हुआ है. तो इस वेबसाइट पर, इस पेज पर जब आप जाएंगे तो आप इस ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है,
कौन है जो न्यूरो लिंग्विस्टिक के लाइसेंस प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखेंगे, किस तरह से आप अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और रिसोर्सफुल रख सकते हैं, किस तरह आप अपने रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत डिटेल के अंदर ये तमाम चीजें ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर दी गई है। साथ ही पूरा कंटेंट, ये जो 21 दिनों की ट्रेनिंग है, ये पूरी ट्रेनिंग के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे, पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको स्क्रीन पर, आप सर की इस वेब लिंक पर आपको अवेलेबल है। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी इसी ट्रेनिंग का एक रिकॉर्डेड हिस्सा है। तो आप बहुत ही डिटेल के अंदर 21 डेज के प्रोग्राम को इस कंटेंट से आप जान पाएंगे कि आप क्या सीखने वाले हैं। प्लस आप इस 70 आवर्स की ट्रेनिंग के अंदर ये भी जान पाएंगे कि एनएलपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, आप जिंदगी के किन किन एरियाज के अंदर एनएलपी को इस्तेमाल करके, उससे हेल्प लेकर अपने लाइफ के उन एरियाज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। चंद एक एरिया आपके सामने जैसे कि नजर आ रहा है वेबसाइट पर, बिजनेस के अंदर आप मास्टरी कर सकते हैं। अगर आप टीचर्स हैं तो टीचिंग के शोबे के अंदर आप अपनी टीचिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं एनएलपी की इन स्किल्स के जरिए। आप अगर ट्रेनर हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग्स को इन स्किल्स के जरिए डेवलप कर सकते हैं। थेरापिस्ट के हैं तो थेरापी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप जो लैंग्वेज के कोर्सेज आप इसके अंदर सीखेंगे, जो कम्युनिकेशन के आप टूल्स इसमें सीखेंगे, जिसमें से इंशाल्लाह कुछ टूल्स आपको कल हम एज अ बोनस दे रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर कल भी ज्वाइन कीजिएगा कि इन टूल्स को आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं इन स्किल्स और टूल्स के जरिए। सो ये ट्रेनिंग मई 22 से स्टार्ट होगी, जो कि तकरीबन 4 हफ्तों पर मबनी है, और एवरी वीक ये 5 डेज अ वीक होगी, मंडे टू फ्राइडे। और जो 4th वीक है उसमें सैटरडे भी शामिल है। और तमाम ट्रेनिंग का जो एवरी डे का जो ड्यूरेशन होगा वो तकरीबन 2.5 से 3 या 3.5 घंटे का हो सकता है। और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये ट्रेनिंग शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक जारी रहेगी जूम पर। सो अब इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसा कि कल हमने शेयर किया था आपसे कि ये लाइव ट्रेनिंग ऑनलाइन लाइव लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है। और जब आप एनरोल करेंगे तो इसमें कामरान सर का एक न्यू एनएलपी होम स्टडी कोर्स की रिकॉर्डिंग है, वो एज अ बोनस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1,70,000 पाकिस्तानी रुपए है। ये आपको एज अ गिफ्ट दिया जाएगा जैसे ही आप इस ट्रेनिंग के अंदर एनरोल हो रहे होंगे। वैसे तो इस ट्रेनिंग की जो वैल्यू है वो तकरीबन $2,500 के करीब है, मगर हमने फास्ट मूवर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है $300 का। अगर आप बाय संडे इस ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करते हैं तो आप 1697 के अंदर, यानी 4,83,000 रुपए के एवज आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और जैसा ही आप एनरोल करेंगे होम स्टडी कोर्स का एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, ताकि आप 22 मई का इंतजार ना करें। आप फौरी तौर पर इस ट्रेनिंग को अपने ही टाइम के हिसाब से अपने ही घर में बैठकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी लर्निंग, ताकि जब आप लाइव ट्रेनिंग में आएंगे तो आपके जहन के अंदर बहुत सारी चीजें पहले ही अवेलेबल रहेंगी। प्लस आप में से अगर कोई ऑलरेडी लाइसेंस प्रैक्टिशनर है सोसाइटी ऑफ एनएलपी से, तो उसको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आपने $1997 नहीं बल्कि सिर्फ $997 के एवज आप ये पूरी ट्रेनिंग को लाइव रिपीट कर सकते हैं। और आप 21 तारीख तक ये वैल्यू आपके लिए, ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहेगी। अगर आपने ऑलरेडी होम स्टडी कोर्स बाय किया हुआ पहले से और आप कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको भी तकरीबन $600 का इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा। आप $1,397 अदा करके ये ट्रेनिंग लाइव अटेंड कर सकते हैं, जो कि बनते हैं 3 लाख तकरीबन 97,000 पाकिस्तानी रुपए।
प्लीज याद रखिए कि आप ये जो पाकिस्तानी रेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं वो आज के यूएस डॉलर का रेट है। तो जिस दिन भी आप एनरोल करेंगे और जो भी यूएस डॉलर के रेट्स होंगे उस हिसाब से आप पे कर रहे होंगे। आप में से जिन लोगों ने कल सेशन अटेंड किया था, तो मैं आपको बताता चलूं कि आज तकरीबन $2.50 के करीब बढ़ चुका है। ये फिगर्स जो आपको नजर आ रही कल डिफरेंट थी और आज डिफरेंट है, और नहीं मालूम कि अगले 2-3 दिनों के अंदर या 22 तारीख तक डॉलर कितना हाई हो जाता है। तो आप अगर अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, आपने डिसीजन ले लिया है कि आपने ये ट्रेनिंग हासिल करनी है, तो आप फौरी तौर पर इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। किस तरह से इन्वेस्ट करना है? आप वेबसाइट के जरिए, जो प्रोमो कोड मैंने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है FM300, अगर आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं बोनस के साथ तो FM300 का कोड आप टाइप करेंगे। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो FM1000, और अगर आपने ऑलरेडी NLP होम स्टडी कोर्स किया हुआ है तो FM300 का प्रोमो कोड लगाएंगे, तो इतनी अमाउंट आपके जो मेजर अमाउंट है उससे माइनस हो जाएगी, यानी कि आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप वेबसाइट के जरिए, अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पे कर सकते हैं कूपन कोड्स लगाकर। अदरवाइज आप पाकिस्तान के अंदर कामरान सर के मीजान बैंक के अंदर भी अपनी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए पे करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपको पूरी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, और जैसे ही आप पेमेंट रिसीट हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको NLP होम स्टडी कोर्स जो है वो एक्सेस उसका मिल जाएगा और आप इमीडिएटली आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कामरान सर से जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो आप कामरान सर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तकरीबन 400 के करीब वीडियोस अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और आज जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये भी 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। और रिसेंटली कामरान सर ने माह रमजान के अंदर 30 डेज NLP इन द लाइट ऑफ इस्लाम के नाम से पूरी सीरीज रन की थी। वो पूरी 30 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ये तमाम वीडियोस बहुत ही हाईली वैल्यूएबल है, हाईली रिकमेंडेड है। आप खुद भी इन वीडियोस को देखें और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने कोलिग्स के साथ भी आप इनको शेयर करें। कामरान सर की वेबसाइट है first-institute.com। अगर आप फेसबुक पे जुड़े रहना चाहते हैं तो कामरान सर का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, facebook.com/Kamran Sultan NLP। प्लस अगर आप कामरान सर से व्हाट्सएप पे कोई भी चैट करना चाहते हैं तो आप सर के व्हाट्सएप पर भी अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं 0300-219-8031। अगर आप NLP से रिलेटेड कोई भी, या NLP की जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जो भी हमने अनाउंस की, इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कामरान सर से बराह रास्त बात कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं इन ट्रेनिंग्स के बारे में तो मेरे भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अब बात होगी गिफ्ट की, क्योंकि सर ने आपको तकरीबन 3 गिफ्ट का कमिटमेंट किया था, तो उसमें से आज फर्स्ट ट्रेनिंग का गिफ्ट आप हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप जुड़े रहिएगा, मजीद NLP के पावरफुल बिलीव्स आप सीखेंगे। तो जो कल जो ट्रेनिंग होगी उसकी डिटेल्स मैं आपको कुछ देर में शेयर करूंगा। मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगले लेडर पर ले जाना चाहते हैं, तो वो NLP के लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कामरान सर, ओवर टू यू। Thank you, Ramzan. Inshallah, we'll continue with the rest of the program. इसमें जो अभी remaining, there are number of different presuppositions जो NLP की हैं, they're remaining. Watch it, take notes, think about this, apply them. As I said, Ramzan ने भी mention कि हम लोग यहाँ पे exercise नहीं कर रहे हैं. It's like इन चीजों को, एक चीज होती है कि आप intellectually समझ रहे हैं, एक चीज है you embody it, you take it in you. उसके लिए we do some exercises, और वो exercises हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम खाली इस वक्त we are sharing some information with you. जो NLP की training होती है, it's experiential, so you learn through experiencing it. So first you get the theory and then you apply it, or you sometimes have the experience first and then you explain the theory. So
there are few more beliefs to learn. Stay here, watch this, and inshallah at the end of this we will let you know हमारा कल का जो program है वो क्या है और किस तरह से आप join कर सकते हैं. So let's begin. Results versus excuses. You are 100% responsible for the results you produce. Okay? हमारी जिंदगी में हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी goal set करते हैं, at the end of the day we have one of the two. Either we have results or we have excuses. Okay? जो हम करना चाह रहे थे, we have achieved it, या we have excuses why we could not achieve it. जी ये हो गया था, वो हो गया था, हुकूमत ने नई पॉलिसी कर दी, फलाने ने मेरे कर दिया, फलाने ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था, मुझे नजर लग गई थी, कोरोना हो गया था, वगैरह वगैरह वगैरह. So we have all of those excuses. Okay, people who really succeed in life, they don't buy into their excuses. This is why you say like बड़े stubborn होते हैं. It's not that stubborn or strong-headedness. Those people just simply don't buy into their excuses. So, saying कि जी मैं क्योंकि जी पाकिस्तान में था तो मेरे पास वो opportunities नहीं थी. अगर ये बात मान ली जाए, excuses मान ली जाए, तो फिर पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स जो है वो कामयाब नहीं होता. Because everyone is in that environment. Okay, और अगर वही वजह से अमेरिका में की बात करें, यहाँ पे opportunities तो हर एक के पास है. So why is not everyone as successful as some of the successful people that you hear about? So it's not because there are opportunities. Now ये एक अलग fact है कि अमेरिका में लोगों के पास opportunities ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में कम है. Okay? अमेरिका में यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, अमेरिका में मैं उस दिन अपनी बीवी से ही बात कर रहा था. I was just explaining it to her. I said, देखो, it's like even at this stage, if I want to start a new career and join a university और मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, it's much easier for me to get an admission. There are many opportunities for me. लेकिन जब मैं पाकिस्तान में था, and if I wanted to do even 10 years back, when I was relatively younger, I didn't have those opportunities. Okay, so it's like यहाँ पे opportunities ज़्यादा हैं, but the thing is, am I using those opportunities? Or I'm just making an excuse, नहीं अब मेरी age इतनी हो गई है, अब वो चीज़ नहीं है, अब वो मज़ा नहीं, अब तो वक्त नहीं गुजर गया. Am I actually buying into my excuses? Okay, so at the end of the day, you have either the results you want or excuses you have. So stop buying into your excuses. So, it's a lot of people actually make this mistake and they believe that their excuses are real. So I missed one. There is no such thing as failure, only feedback. All results and behavior are achievements, whether they are desired outcomes for a given task or context or not. Okay? There is no failure. It's only feedback. You set an outcome and you start taking your actions and you do whatever you can to the best of your abilities, and you may or may not get the result you want. Now, does that mean you failed? No. It means what you were doing, the way that you were doing, it doesn't work. It doesn't work that way. You need flexibility. You need to change your approach. You need to do things differently to get the result you want. Okay, so it's कल मैंने जब start किया था program, this was one of the things, how to get most out of this program. This was one of the things, be willing to fail. Because if you're not willing to fail, if you're operating from this, yaar kya hoga, it's like when people are working with people, I see a lot of coaches making this mistake, by the way. Okay. मैं कई groups में यहाँ पर Facebook के ऊपर और LinkedIn में कई मुख्तलिफ कोचिंग से रिलेटेड लोगों के ग्रुप्स हैं, या गोरों के, उसके अंदर अक्सर वो कमेंट्स होते हैं और जो सवालात होते हैं, तो मुझे हैरत हो रही होती है, which is very common actually. हमारे यहाँ भी वही चीज़ होती है. क्या होती है? People as coaches, when they're working, they are trying to please their clients. Okay, they're not coaching, they're not serving people, they're people pleasers. Oh, what if my client doesn't like this? What if I say this and they don't like it? What if they don't sign up for my next session? What if? Okay, so they're not serving people, they're trying to please people.
My job as a coach is not to please you. Okay, now what's the difference? So for example, let's suppose कि somebody comes and asks me कि जी मेरे ऊपर ये वाला कलर जो है वो कैसा लग रहा है. Okay, pleasing would be, I would say हाँ जी बहुत सूट कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, because that's what they want to hear. Okay, that's people pleasing. But if I am an honest coach and I find that color doesn't suit that person, I have to tell them exactly what they need to listen. I tell them, actually, you know what? ये आपकी एज के हिसाब से बिल्कुल आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा. Okay, it's better that you change. You know, if you go and you wear this, people will make fun of you. It doesn't look professional. Okay, or something that they need to hear. They may not be pleased with my answer, but that is what will help them, will serve them. So when you're working with people, one thing I said yesterday is be brutally honest with yourself. The other thing is be brutally honest with people you work with. Okay, don't try to please people, because you will not be successful if you do that. Okay, I may say something, मैंने आपसे कल भी कहा था, I may say something in this program. When I say that, you may feel, ugh, and that's when you need to look into yourself. Because I will be telling you what I know you need to listen. Not something which I think, oh नहीं अगर मैंने बोल दिया अभी तो अच्छा नहीं लगेगा. You know, it's like मेरी भी एक personality है, तो मेरा क्या image बनेगा. You know, if I'm thinking like this, मेरी personality, मेरा image, I'm thinking about myself. I'm not serving you in that case. If I want to serve you, if I want to do something for you, I have to do what is good for you, not for me. Understand this. When we work with people, our job is to serve them to the best of our abilities in a way that is best for them. Okay, so we may do sessions. I've done it many times. I'll share lots of examples with you later, inshallah. You know, I've done many times sessions जहाँ पर, you know, at the end of the session, the person may say, "Oof, it's not, please, I don't want to see this person again." But you know, those people are so happy, they send you more clients to me because they feel the change, they feel the difference. But then there may be some people who say, हाँ जी बहुत अच्छे आदमी है कामरान साहब, आपको कोई फायदा नहीं, फायदा तो नहीं, आदमी बड़े अच्छे हैं. I have not served them. Okay. Ji Saiba, there's a big difference between therapy and coaching, and we will talk a bit about that because coaching का मेरा एक बिल्कुल different program है. But we'll talk about that sometime later, inshallah. The answer to your question is, Saiba, yes. Shiba. Oh, sorry. The delivery guy made that mistake, realize that. So then we have all procedures. All procedures, NLP techniques are designed to increase choices. Okay, all procedures and techniques are designed to increase choices. NLP का जो basic objective is to add more choices. There is one missing here, and that is in your manual. I'll just explain, and that one is very simply this. Okay, there's this 14th one which was missing here, and the 14th is simply this. Mind, body, spirit are all one. Okay, at the deepest level, we are all connected. Okay, अगर फर्स्ट करो एक एक्वेरियम है, ओके, उस एक्वेरियम में एक मछली है इधर इस कोने में, एक मछली है इस कोने में, एक मछली है इधर, एक मछली है इधर, एक मछली है इधर सेंटर में. अब उस एक्वेरियम में उस पानी को प्यूरिफाई करने के लिए अगर कोई चीज डाली जाए, उसको प्यूरिफाई किया जाए यहाँ से, ओके, सो क्या खाली यहाँ पे जो मछली है इसका ही फायदा होगा या यहाँ वाली का भी होगा? व्हाट डू यू थिंक? और अगर पानी के अंदर फर्स्ट करो कोई गंदगी की गलाजत डाली जाए, will it affect just the ones here or will it affect these here as well? दूर वाली का भी. Entire aquarium. Right. Now, क्यों?
इवन दो अगर मछली के हवाले से देखा जाए, मछली का जो एक्सपीरियंस है जी, मेरा उससे क्या ताल्लुक, मैं इस कोने में वो उस कोने में, वो चलने दो, मरने दो, उसका क्या है, व्हाई शुड आई बॉदर माई सेल्फ, व्हाई शुड आई केयर, मेरा उससे क्या लेना देना। बिकॉज मछली के बारे में कहते हैं जस्ट लाइक पानी, बिकॉज उसका एक एनवायरमेंट होता है, तो उसको इस चीज का अंदाजा नहीं होता that there is this connection between them, they are connected through that environment। इसी तरह मैं और आप और तमाम इस दुनिया में रहने वाले जो इंसान है, just think about this by the way, हम फिजिक्स में एक चीज पढ़ते थे और वो क्या था कि जी एक छोटी सी बॉल है, अगर आप उसको यूं करके रोल करते हैं, वो बॉल यहाँ से वहां तक जब जाती है तो E is equal to mc स्क्वायर, इस बॉल की मास इतना है, इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर, तो आप you find that this is the amount of energy this ball has produced। okay, so अगर एक छोटी सी बॉल, इतनी सी बॉल यहाँ से वहां तक 10 फीट रोल करने में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जस्ट इमेजिन ये बॉल जिस पे हम रहते हैं, जिसे हम अर्थ अपना प्लैनेट कहते हैं, ये बॉल कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। सो अगर एक छोटी सी बॉल यहाँ से वहां तक जाने में एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये बॉल जो कॉन्स्टेंटली, और लाइक साइकोलॉजिस्ट हर जगह आ जाते हैं, फिजिसिस्ट टेल अस कि the movement, the speed is 25,000 kilometers per hour। so जो अर्थ का circumference है और 24 घंटे में वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, considering that, okay, so it's moving at that speed depending on like where you are on earth, 1000 I'm sorry, it's like 1000 kilometers per hour, something like that, but it's really fast। okay, the thing is this कि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा एनवायरमेंट है, and we all live in that sea of energy, and that's how we are all connected, and this is the reason probably why, जो मैं आपसे कल बात कर रहा था in question answer sessions में, कि it's like हम कभी किसी दूसरे की सोच जो है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एनवायरमेंट में कहीं दूर है, we retrieve that, because that information is over those, is within this same sea of energy in which we are, so our brains get attuned to that information and we start retrieving it, we start receiving it। so in that sense we are all connected। ये जो कुरान की आयत है ना कि जब किसी एक को इंसान को मारा तो ऐसे सारी इंसानियत को मार दो, नाहक किसी को कत्ल किया अगर, और इसी तरह अगर किसी की जान बचाई। जस्ट थिंक अबाउट दिस, हम यहाँ पर हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हम अमेरिका में बैठे हैं, किसी को फलस्तीन में मार दिया तो मेरा आपको क्या किया, हम तो हम तो अपने एक्वेरियम के इस कोने में, वो वहां पर मार रहे हैं, हमें हमारे के जा रहा है, बट वी आर ऑल कनेक्टेड। आई रिमेम्बर many years ago जब ये अफगान वॉर हुई थी, तो मैंने एक अमेरिकन वो था फौजी, उसका इंटरव्यू कहीं पे टीवी पे सुना था, and he said something very interesting। उसने he had participated in the war for the first time, तो उससे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि like what did you learn in this war, and he said what I learned is when you kill a person, there's a part of you that dies at the same time। just think about this, because there is this connection that we have with each other। now in NLP, what we are saying is, because we are all connected, it's like instead of trying to change other people in your life, when you change yourself, you will find other people will start changing। okay, so हम थोड़ा सा एक और चीज आपको थोड़ी सी, I'll just share something जो master practitioner level की के ऊपर हम बात करते हैं, but just briefly, I'll not go into a lot of details on this। We say it's like this: when you change the way you look at things you look at change। okay, so when you change yourself, you start changing, experiencing life, your experience of life changes। okay, so ये सारी जो थी, ये presuppositions हैं NLP की, okay, or what we call the convenient beliefs of NLP, or
You have them in your manual as well. Let's do a quick exercise on this. So this is it from us today. Thank you very much, everyone who joined. I hope you enjoyed it. Do let me know, share your comments. If you are in any of my groups, share your comments in the group. So at least I know you were there. And if you find this useful. So हमारा जो कल का सेशन है उसके बारे में रमजान, you want to share something about that? Yes. So here is the gift number 2 for you as committed by Kamran sir. मैं आपको रिपीट कर दूं कि गिफ्ट नंबर 1 जो अभी आपने एनएलपी के बिलीव्स देखे हैं, ये वीडियो 24 आवर्स के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी और जब जब आपके लिए मुमकिन हो इसको देखते रहिए। और अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहते हैं तो आप कामरान सर की वेबसाइट पर जाकर इसको बाय भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी सेगमेंट को। सो फ्रेंड्स, गिफ्ट नंबर 2 आपके लिए डिस्कवर द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड इफेक्ट्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। ये सेशन कल लाइव रन किया जाएगा कामरान सर के यूट्यूब के चैनल पर शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। सो ये आपके लिए कल अवेलेबल होगा, डिस्कवर द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सेशन भी इतना इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को अपने आप के साथ और किसी भी दूसरे शख्स के साथ इंप्रूव कर सकते हैं, इन टूल्स को, इन स्किल्स को अप्लाई करके। सो ये है कामरान सर का यूट्यूब का चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। कामरान सुल्तान @ कामरान सुल्तान लाइफ कोच, तकरीबन 400 के करीब यहाँ पर वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। और ये जो लाइव सेशंस आप देख रहे होंगे वो आप जब लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग नजर आएगी। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि कामरान सर का जो ऑनलाइन लाइव लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है 22 मई से 17 जून तक कंडक्ट की जाएगी, जो कामरान सर बजाते खुद कंडक्ट करेंगे। और इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं 22 तारीख से पहले। और अगर आप इस वीक के अंदर यानी कि 7 मई तक संडे तक एनरोल होंगे तो आपके लिए डिफरेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर आप कामरान सर से बात करना चाहते हैं या मुझसे इस ट्रेनिंग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई कंसर्न्स हैं, मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे और कामरान सर से बराह रास्त राब्ता कायम कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। सो कामरान सर, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। So thank you very much, everyone. Just make sure that you keep on learning. Stay in the process of learning. चाहे आप उससे सीखें या किसी और से सीखें, learning कभी मत रुकिएगा. Learning is a never-ending process, especially for us, for Muslims. माँ की गोद से कब्र तक हमें सीखना है, इल्म हासिल करना है, दीन का इल्म हासिल कीजिए, दुनिया का इल्म हासिल कीजिए. Stay in the process of learning. And inshallah, I'll see you tomorrow.